Namaskar viewers, this is yet one more video. Up till now I had been making only serious videos. This time I thought let's have something different written in the manuals, especially in the mechanical engineering department, and there are sometimes double standards adopted in the manuals and the conditions and the provisions given. So through this video I will like to I would like to present certain rules which are having double meanings. जैसे at one place वो बोलेंगे मारो, दूसरी जगह बोलेंगे नहीं मारो. आइए कुछ आपको मज़ेदार चीज़ें दिखाता हूँ. ज़्यादा नहीं, क्योंकि पीस मिल में दिखाऊंगा, एक बार दिखा दूंगा तो मेरा भी स्टॉक ख़त्म हो जाएगा. वेल व्यूअर्स, एक चीज़ इज़ वेरी क्लियर. Our manual does not contain a single chapter where certain parameters have been defined falling under rejection limit. Okay. So when our manual doesn't have any rejection limits, do we have anything like rejection in mechanical? Yes, we do have. In IRCA there is chapter 4 जिसका heading ही comes to rejection. It is captioned as rejection, and the very first para 4.0 says rejection rules for broad gauge stock. Now what are these rules and what are these limits? I cannot explain totally in this slide, but just I will touch it out. You can find it for yourself. From workshop, stock must not be allowed with any rejectable defects. The stock must be turned out after complete repairs in accordance with the rules laid in chapter 2 and chapter 3. The permissible wear, kindly note, and clearances on different components shall conform to the limits and tolerances specified for the workshop. Then it further mentions from SICK lines, stock must not be allowed with rejectable defects. Rules laid down in chapter 2 and chapter 3 shall be followed. So what is important for us is to go to IRCA part 3 and part 4. Part 3 is for goods stock and part 4 is for passenger stock. Now what does the next rule says? Notwithstanding any provision in the rules, rolling stock must not be allowed to run. Just I repeat, rolling stock must not be allowed to run if in opinion of the carriage and wagon supervisor it is in such a condition as to cause an accident. और वो क्या condition है? Broad gauge goods stock with any of the defects listed below shall not be allowed in service. Such of the clauses which have direct bearing on the safe running of trains have been prefixed with the letter S for guidance of the concerned staff. मैं आपका ध्यान थोड़ा सा अगेन इस लाइन की ओर लेके आऊँगा कि broad gauge stock with any of the defects listed below shall not be allowed in service. Such of the clauses which have direct bearing on the running of trains have been prefixed with the letter S. तो उसमें जो डिफेक्ट होता है वो डिफेक्ट का एक नंबर होता है से समथिंग लाइक 4.19.2.3. तो उसके अगर आगे S लग जाता है तो इसको हम लोग जो है सिक बोलते हैं. दिस स्टॉक विच हैज़ दैट ऑफ अ डिफेक्ट, दैट सॉर्ट ऑफ ए डिफेक्ट शुड नॉट बी अलाउड इन द ट्रेन कॉम्पोजिशन. अब ये यहाँ तक ये बोलता है. अब इसका डबल स्टैंडर्ड में थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ. इसी के IRCA में नेक्स्ट चैप्टर है
and next rule is 4.22 एक्सल बॉक्स डिफेक्ट्स। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, जो मैंने यहाँ बताया है और जो यहाँ बताने वाला हूँ। एस, इस तरह से ऐसे लिखा जाता है। 4.22 उसका रोल नंबर दिया है 0.1, और डिफेक्ट क्या है? हॉट बॉक्स। अगर एक्सेल बॉक्स हॉट हो गया है, वो गाड़ी को नहीं चल रहा है। थोड़ा सा गिव मी योर अटेंशन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। आई रिपीट, hot box falls in chapter 4, rule 4.22.1 and marked as S, and S means for the guidance of staff, and a defect listed below shall not be allowed in service, right? now आपको दूसरा चीज दिखाऊं। S 4.22.2 is Excel box broken, इसमें भी S लग गया, दोनों में S लगा है। आगे क्या बोलता है? S indicates safety item. However, it should be primarily understood that service wear limits mentioned in this book are not safety limits. Agreed? Can be. Service wear limit are far more restrictive when compared with wear limits of safety. Hence, any variation from service wear limits as stipulated should under no circumstances be considered unsafe for running of wagons on trains. अब बताइए, ये एक्सेल बॉक्स टूट गया है, under no circumstances be it considered unsafe or be it not considered unsafe for running of trains. ये क्या मीनिंग है? ये क्या मतलब है इसका? हॉट बॉक्स है, उधर आप एस लगा रहे हैं और नीचे बोलते हैं नहीं नहीं इसकी सर्विस लिमिट बहुत है, जाएगा। हाँ जाएगा, रास्ते में गिरेगा, जरूर जाएगा। So this is what I wanted to show you, how there are double standards maintained here. अब जिसका एक्सेल बॉक्स टूटा हो, आप चला दो गाड़ी में, कितनी दूर जाएगा? आइए एक दो और चीज़ें आपको सिमिलर मैं दिखाता हूँ। दिस इज ऑल्सो extract from IRCA. This is for wheel diameter. Now here it says the wheel diameter should be measured at 63.5 mm from gaze face, back face of flange. Variation in tread meter on the same axle as specified above shall apply at the time of reprofiling or tire turning of tread on a wheel lathe. There is no in-service limit. बराबर है। अब बोल दिया उसने कि सर्विस लिमिट कोई नहीं है। अब यही लाइन दिखा करके इंजीनियरिंग वालों को थोड़ा सा दौड़ाते रहते हैं। मैं आपको एक अलग चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा ICF कोचेस। अब मैं ज़्यादा बात करूँगा तो ठीक नहीं है, बट इवन सूर्यनगरी एक्सप्रेस में जो गाड़ी गिरी थी कल्प्रिट वॉगन, उसके सेम एक्सल में 5 mm का डिफरेंस, सेम ट्रॉली में 13 mm का डिफरेंस, और सेम कोच में 18 mm का डिफरेंस। However, these defects did not find a place in the final report, a matter of great regret for engineers. यहाँ क्लियरली दिया गया है नोट में, यहाँ में नोट 3 दिया हुआ है, नोट 3 में दिया गया है, जिसको मैं आपको एनलार्ज करके दिखाता हूँ। It has been mentioned that the variation in tread
circumference of the wheel on the same axle should not exceed 1.6 millimeter on dia. तो 1.6 मिलीमीटर सर्कमफ्रेंस में नहीं आना चाहिए, तो इसको 0.5 का अगर आप वेरिएशन कर लो ऑन डाया का तो 1.6 ही उसका आएगा सर्कमफ्रेंस में, तो हार्डली मैटर्स। कौन कहता है नहीं है डिफरेंस? यहाँ बोलते हैं व्हील डाया में कोई फर्क नहीं है, यहाँ बोलते हैं 1.6 mm। सर्कमफ्रेंस डिफरेंस नहीं होना चाहिए ऑन डाया on the same axle. The variation in the wheel dia between one pair of wheel and the other should not exceed 5 mm on the same bogie. The variation on dia on the same coach should not exceed 13 mm. कौन कहता है ये सब? आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है ये। आई एम सॉरी, दिस इज आई हैव टेकन पार्ट 3 for goods and now I am referring to coaching, but same thing is there in the IRCA part 4. If you open it out, the same wheel diameter difference, एक ही चीज़ है, उसमें कोई अंतर नहीं है। Because I was dealing mostly the goods, that's why this extract is from IRCA part 3 and this is of ICF coaching manual. तो हम ऐसे वो बोल देते हैं और हम घबरा जाते हैं, तो यहाँ कुछ बोलेंगे मैनुअल में कुछ लिख देंगे, पता उनको भी है। इस पे भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है जो आपको नेट पे मिलेगा, वो सारा जंबल किया हुआ वर्डिंग है, उसमें क्लियर नहीं है। ये हार्ड कॉपी से एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, जो प्रिंटेड कॉपी है उससे। सो दिस इज हाउ वी आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, दिस इज हाउ वी आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड बाय शोइंग डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ रूलिंग्स। वेल वो मैंने आपको कोचिंग के बारे में भी बताया था। नाउ दिस इज फॉर डीजल लोकोमोटिव, दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम डीजल लोकोमोटिव मैनुअल। और कौन कहता है सर्विस लिमिट नहीं है? क्या लिखा है? द फॉलोइंग लिमिट अप्लाई टू व्हील डायमीटर्स, द न्यू वैल्यूज लिस्टेड बिलो आर टू बी यूज्ड व्हेन टर्निंग or profiling wheels in shop. The worn values are to be used when inspecting locomotives to determine the need for wheel turning, and not more than 0.5 is for the new one and worn out is 1.6. Please keep in mind. (1.6) on the same axle, 6.4 on the same trolley and 31.8 on the same loco. This is for diesel. Now I'll be showing you on electric locos. See here, service limit. Here they have correctly, rightly mentioned service limit. IRCA में no service limit. ये इधर भी जाते हैं, ये उधर भी जाते हैं। This is 2.5 on the same axle for electric locomotives, WAM, WAG5, WAP and so on. It's always 2.5 for WAP4, it's 1.5. Again for WAP5, 7 and 9 it's 2.5. CAM1 is 1.5, then similarly CAM3 2.5 and WAG7 it's 2.5. So, कोई चीज़ आपस में मिलती है, तो डोंट गो बाय व्हाट दे से, गो बाय व्हाट वी रीड, व्हाट इज अवेलेबल। उसने बोल दिया और हमने सुन लिया, नेवर। दोस्तों ये अक्सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैनुअल्स वगैरह में हमने इसको देखा है, और आज मुझे आदरणीय श्री SK जैन साहब की वो बात याद आ रही है। NF में एक 95 में मेल एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, तो ऐसे ही कुछ मतलब बातें करते करते
तो उन्होंने कहा यार एक काम करो, तुम लोग भार्गव की डिक्शनरी में मैकेनिकल का मीनिंग क्या है इसको थोड़ा देखो। अब हम लोग सारे चक्कर में आ गए, बात क्या है। एनीवे वो आज भी मुझे बात याद है, हमने देखा और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये भार्गव की डिक्शनरी है। आई जस्ट डाउनलोडेड दिस पेज फ्रॉम नेट. So this is given over here, the meaning of mechanical word. So this is very small indeed, so I would just have this thing enlarged and show you what does it mean. No. अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी So the meaning of mechanical अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी means pertaining to machines and अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी so I still remember 95 की बात थी। अबे ओ और जैसे दिवाली की हम लोगों फुलझड़ी ने वो चीज़ निकाल के देखी, we too were laughing like अबे ओ Nana दिवाली की Patekar and all. फुलझड़ी So just I don't mean to अबे hurt ओ दिवाली की anyone, फुलझड़ी but this is what is mentioned in अबे ओ the दिवाली की books, फुलझड़ी mentioned in the manuals, and mentioned अबे ओ दिवाली की IRC, फुलझड़ी etc. This is what I have given a reference to it. I hope अबे ओ you will दिवाली की like it. फुलझड़ी Well, friends, this was something like a humor hunter tracking laugh in the wild. I thought of sharing my views because I have suffered a lot about all these accidents and all, and still, you know, I am wherever getting any information from any corner, I do just jump into their mobile phones and ask them, भाई कुछ है तो मुझे बताओ, so that I also gain knowledge from these accidents. And truly speaking, I must share with you, there are certain items after superannuation, you know, I have learned a lot rather than what I was knowing while I was in service. Maybe these were track machines, maybe these were derailments. Of course, sometimes I also be a part in some arbitration cases, disciplinary cases also. But anyway, I hope you will like this. And once again, thank you. This is Gurjeet Singh. Say goodbye. Thank you. Sat Sri Akal. Coffee to all.